बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का आपका लेक्चर है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का 5th लेक्चर। इसमें हम स्ट्रिक्टली प्रोग्राम को बनाना सीखेंगे, कैसे प्रोग्राम्स हमने जो फ्लो चार्ट्स बनाए, आई होप सब ने असाइनमेंट की होगी, उनकी लॉजिक सीखी होगी। लास्ट हमारे लेक्चर्स वर टोटली अबाउट बिल्डिंग लॉजिक एंड नाउ ये जो लेक्चर्स हैं इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इन सब लॉजिक्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को आईडी बताया था विजुअल स्टूडियो कोड। सो ऑन द विजुअल स्टूडियो कोड लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट प्रोग्राम्स, और हम प्रोग्राम्स करेंगे फ्रॉम आवर असाइनमेंट एज वेल एंड ऑन द कंट्री एज वेल। सो सबसे पहले आप लोग अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करें, डबल क्लिक। ओके, दिस इज द ओल्ड कोड। सबसे पहले आप लोग नई फाइल बनाएं। You guys can call this, पहले इसको save as कर दें, put this on the desktop, call it second program, और जो मर्जी आप कहना चाहें, .c, wait, इधर से टाइप ज़रूर आप लोगों ने कर देनी है C++, so the compiler can understand it, और उसके मुताबिक वो हमें debugging दे और सारे हमें ऑटो कीवर्ड्स सामने आने शुरू हो जाए। ओके, सो वी ऑल नो, सबसे पहले हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आते हैं, हैश इंक्लूड यस। तो आईआर स्ट्रीम मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। दिस इज फॉर द बेसिक इनपुट आउटपुट, ताकि हमारा प्रोग्राम इनपुट ले सके और आउटपुट दे सके। सेकेंड इज द यूजिंग namespace standard, std. Okay, this is also for the basic operations जो हर प्रोग्राम में हम यूज करते हैं। ओके, उसके बाद हमने अपना मेन फंक्शन डिक्लेयर करना है, just the easy one right now. Okay, actually let's do the other one, main, yes, इतना ठीक है। this is the comments, मतलब इधर हम अपना कोड एंटर करेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ी थी डेटा टाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट दिस इज अ डेटा टाइप int and main is our main program. This is the line of code जो execute होगा। We don't have to execute this function automatically। main हमारा main code होता है तो वो चलता है after the pre-processing। ये जो pre-processing ऊपर होती है उसके बाद हमारा कोड यहाँ पे चलता है। Okay, this is a data type integer। so क्योंकि ये integer है तो उसने कोई वैल्यू भी रिटर्न करनी होगी। so let's start with basic integer, let's call it a number, और हम इस नंबर को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, और let's leave it right now। let's take another number, number 2। now we can't write it like this because ये इसकी नेमिंग कन्वेंशन के खिलाफ है। हमेशा नेमिंग, हमने जब किसी डेटा टाइप को नेम करना है उसके अंदर स्पेस नहीं हो सकती। वी कैन पुट अ अंडरस्कोर इन इट बट स्पेस नहीं हो सकती। ओके, तो अगर मैं इनको इनिशियलाइज भी कर दूं तो दैट मीन्स इनकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। ऑल्सो दिस इज अ वे टू इनिशियलाइज, एंड द सेकेंड वे also from here, number underscore 2 is equal to 0। so we're just discussing initialization, number underscore 2। okay, so यहाँ पे क्या हुआ है,
declaration. This is a complete declaration of a number of the int type. अब कंप्यूटर को पता चल गया कि ये इस नाम का वेरिएबल, नंबर नाम का वेरिएबल एक इंटीजर होगा, तो इसके अंदर हमने जो वैल्यू स्टोर करनी है वो एक इंटीजर होगा। इंटीजर की डेटा टाइप यू गाइस नो कि डेसिमल पॉइंट्स के बगैर होती है। उसके अलावा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि हमारे रैम के अंदर एलोकेट हो जाएगी मेमोरी। यू गाइस नो दैट एन इंटीजर इज ऑफ 2 बाइट्स, यस, ओके। सो अब मेमोरी एलोकेट होगी है, उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एज वी लर्न फ्रॉम द स्लाइड्स, ओके। सो an integer called number is equal to 0 is declared, another integer is declared, और यहाँ पे उसी declared number की initialization होगी है, initialization / assignment, we assigned 0 to number underscore 2, okay। Now what I want you guys to do, or what we will do together, आप लोग भी अपने लैपटॉप्स को मेक श्योर करें ऑन है, साथ साथ आप कर रहे हैं ये, इट्स अ फॉलो अलोंग वीडियो, आप लोगों ने साथ साथ ये प्रोग्राम करना है। राइट ए प्रोग्राम दैट displays the value of 2 numbers, not the value, displays the sum of 2 numbers. Write a program, 2 numbers which are 5 and 10, okay। ओके तो अगर आप लोगों को ये प्रोग्राम दे दिया जाए करने के लिए, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द सम ऑफ 2 नंबर्स, तो हमें अपने फ्लो चार्ट से याद है कि क्या लॉजिक है 2 नंबर्स को ऐड करने की, और यहाँ पे हमने देख लिया 5 and 10 हमारे 2 नंबर्स हैं। सो हम इनको कुछ भी नेम कर सकते हैं। लेट्स नेम दिस नंबर 1 number underscore 1 and name this number underscore 2. Number 1 is 5, so हम क्या करेंगे, नंबर 1 को इनिशियलाइज करेंगे 5 के साथ, and number 2 will be 10. so यहाँ तक हमारा प्रोग्राम is good to go। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क है डिस्प्ले द सम ऑफ 2 नंबर्स। तो फिर हमें एक, इसका मतलब हमें सम भी डिस्प्ले करना है, दैट मीन्स हम इसको एक कोड वेरिएबल बनाते हैं सम का। नाउ दिस कैन बी डिस्प्लेड इन अ नंबर ऑफ वेज, एक काम करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। सो लेट्स जस्ट कवर बोथ दोज वेज। सम इज इक्वल टू 0, इसको इनिशियलाइज करते हैं। अब लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी the cout, so let's do cout, okay। let's display sum। सबसे पहले हम sum ऐसे ही डिस्प्ले करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। so let's run this, okay। okay, there's an error. What's the error? I think this is the error. Okay, I fixed the error. तो let's see you guys, मैंने मेन को चेंज किया है और cout की I think these were different, they're supposed to be in this direction। anyways, हम अभी देख रहे हैं कि जब मैं इसको रन करूँगा तो सम में हमें 0 नज़र आ रहा है। That's because sum is 0, but what our goal is कि नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करें।
So what we can do right here is sum के variable को हम update कर सकते हैं like this. Sum is equal to number underscore 1 plus number underscore 2. So let's run this program now. 15. So this is what we required from the program. Write a program that displays the sum of two numbers. Okay, so let's see how we can do this program in another way. So उसके लिए हम क्या करेंगे? Let's comment the sum variables. उसकी जगह हम डायरेक्ट अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर लेते हैं. नंबर 1 plus number 2. Okay, this is a direct operation. So also जब इसको रन करेंगे तो 15 आएंगे. So this is another way of doing the same task. So you guys are not bound to do a task in the same way that I do it. Okay, so let's polish this program a little. अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सीखना है कि इसको हमने अच्छी तरह आउटपुट कैसे, यूजर को कैसे पता चलेगा. लेट्स आउटपुट समथिंग, मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल. ओके, सी आउट के आगे हमने कुछ भी टाइप करना है लाइक दिस, द सम ऑफ दीज नंबर्स ऐसे एंड विद अ प्लस. इससे हमारी ये दो स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे. तो एंड स्टेटमेंट, what the end else statement does is end the line और next line पे ले जाता है. Okay, आप लोगों को concatenation का समझा दूं. Concatenation, what this means is दो strings आपस में combine होके एक string हो जाए. So let's look at this result, फिर आप लोगों को और समझ आएगा. ओके, सो इस कोड को हम एग्जीक्यूट इस तरह करेंगे, इसको हाईलाइट करके रन कोड करेंगे. बट बिफोर दैट लेट्स एक्सक्लूड कॉन्कैटिनेशन फॉर नाउ. इसको एक पूरे लेक्चर में, स्ट्रिंग के लेक्चर में कवर करेंगे. सो राइट नाउ लेट्स लुक एट दिस. सिर्फ आउटपुट करते हैं द सम ऑफ दीज नंबर्स. रन कोड. ओके, द सम ऑफ दीज नंबर्स ये हो रहा है. इसके बाद एक और सी आउट करते हैं. सम ओके, ये 15 इसलिए आ रहा है बिकॉज द कोड isn't being updated. So let's update it like this. Run code. Okay, looks good. The sum of these numbers is 15. तो इस तरह हमारे यूजर को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है इधर. ओके, सो ये प्रोग्राम हो गया आप लोगों का adding two numbers. We already did this in the flowchart. तो अभी हमने इसको implement भी कर दिए. So let's move on to another one, another example. अब हमने क्या करना है कि हमने यूजर से दो नंबर इनपुट करवाने हैं पहले, फिर उनको डिस्प्ले करना है. तो
We all know for output we use cout, and for input what are we going to use? Cin, the cin statement. So how does the cin statement work? Cin and opposite direction and number 2, just like that. हम इनको ऑलरेडी जो हमने इधर इनिशियलाइज किया होगा उसकी जगह हम इनको यूजर के थ्रू इनिशियलाइज कराएंगे। और नंबर 1 को भी इसी तरह, इसकी जगह we have to put number 1. ओके, यहाँ पे हम टाइप करेंगे हम कमेंट कर देंगे taking input. This is you don't have to mandatorily comment. This is for your own understanding. और मैं इसलिए कमेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को एक एक स्टेप का समझ आ जाए क्या हो रहा है। तो जब हम सी इन करेंगे नंबर 1 एंड नंबर 2, दैट मीन्स यूजर इनपुट करेगा। मगर जब हम इनको ऐसे ही सी इन करवा लेंगे तो how would the user know what to do? So उससे पहले हम सी आउट कराते हैं something over here. See out. Welcome to my program. उसके बाद and that means go to the next line, end this line. After that, let's see out. Enter first number. Okay, that means इसको सी इन करने से पहले ये आउटपुट आएगी। उसके बाद after this one we go like see out, enter second number. Okay, let's see how this looks. Run code. Okay, first welcome to my program. Okay, enter first number, so I'm going to type 20.